Hey, hi everyone. So we'll wait for a minute, like every time, and to see if someone else wants to join. So that's how it is. And meanwhile, I'll just paste the link if someone wants to join the stage. So just give me 1 second. Yeah. So I have given the link now, and if someone wants to join the stage, they can join through that link. Yeah, in the description I have pasted. Yeah, in the description I have pasted the link, and if someone wants to join, they can join it from there. So today, like, we'll be discussing some of the results that previously the companies that we have discussed, and like, we want to see like how we thought about the companies and how the companies are performing, and if like how wrong or right uh, we were in like about the companies when we analyze them. So that's how it will be. So as of now, I can see 5 people are watching and 5 people have joined. So I just wanted, like, maybe if people who are watching, they can live, or maybe they can comment also. So that will be very helpful, and it will help it to reach to more and more people out there. And if someone wants to join the stream, I have given the link in the description, and I'm giving this link into the live chat also. So that will help uh, if someone wants to join this stage, right? Yeah. So we'll begin with the company's results. Just give me 1 second. Yeah. So we'll begin with the company's results that we have covered previously. Uh, so there's the company named Tilaknagar Industry that we covered last time. Uh, and after we covered it, the company's share price, like, suddenly it rose maybe more than 50%, and then again in last 2 weeks it has come down. Few of the reasons could be like there was a slight dip in the company's revenue, and specifically, the company is based in the south, and we all know there was a dispute in the Telangana and Andhra states with the government with respect to the government's liquor policy. Like Telangana, most of the liquor is controlled by the government only. So that's how it is. And like after that, companies apart from that, companies actually revenue got decreased. And what has happened after that, they had, like, we have discussed it in our video also, that company was having a dispute on the brand name of Manison with ABDL, which is also a listed company. And recently, like, Bombay High Court has given a decision in the favor of uh, the court decision was in the favor of ABDL. Like, maybe ABDL now can launch with the brand name of Madison. I believe they can launch in some of the northeast states. Now they can launch this. So this is how the share price was, like, saw 20%. I believe first day it was like 20% circuit down. The other day it got again 10% circuit down, and that's how it has happened. I wrote a mail also to the company, and where, like, Roshni Singh, hey, hi Roshni, thanks for joining. Uh, if anyone wants to join the stage, they can just use the link which I have given in the description.
so they can join from there also. So I wrote a mail to the companies like the investor relation where it was, and I just wanted to know their stand, how they feel like about this brand issue, and what are the measures that company will be taking to protect it. I didn't get a response from them, which was like quite expected from their end. Apart from that, a normal document that company has issued, in that company wrote it. It was like they said that they will be going into further with the higher court and all those things the company has written, and that was a very standard reply that company has written in that exchange filing. So this is one of the thing that I thought of like maybe discussing with you. And then after that, Roshni Singh, hello, hello Roshni madam, hello Saroj Pal, hello Saroj madam, Sandeep, hello, hello Sandeep ji. So these these are like they. Then the company in, okay, someone wants to join the stage. Manikant Singh. No. Hey, hi Manikant. If you have any questions, maybe you can put there. सरोज पाल का क्वेश्चन है. Hello Manikant, if you can hear, maybe you can ask your question. सरोज पाल का क्वेश्चन है, can you discuss about some retirement plan investment of different companies? Okay, so this may be regarding जो आपका वेरियस आई बिलीव आप बोल रहे हो कि जो भी हमारे रिटायरमेंट के लाइक LIC एंड ऑल जो हमारे रिटायरमेंट के प्लान्स हमको देते हैं. आई बिलीव दिस इज रिगार्डिंग टू दैट. ओके, वन मोर पर्सन, रोशनी सिंह. I have added to Roshni also. Hey Roshni, if you have any question, you can put it, and you are unmuted also. Yeah, hello. Hey, hi. Can I ask regarding anything like my financial state issues or like investing thing, anything? Yeah, yeah. If I have an idea about that, I will definitely try to answer. Or you want me to ask on any particular basis, like any particular field is there which I can ask? नहीं नहीं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. Maybe if I don't know, I will say I don't know. That's not an issue. Okay, you have the idea of NFO, investing in NFO. NFO is like new funds offer, right? Yeah, So, yes, yes, yes. okay. So whenever a mutual fund house, might भी आपका ICICI हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, XYZ कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस हो सकता है. So whenever a mutual fund house they come up with a आपके नए स्कीम के साथ जब वो आते हैं, right? So that is known as new fund offer. That is NFO. Like Oh, एक कंपनी जो है वो आपकी IPO के साथ आती है. Whenever they are coming for the first time, that is like IPO, and then whenever there's oh, uh, scheme, a new mutual fund scheme comes, that's known as NFO. That's how it is. okay, okay, right. Investing in that, any new schemes are coming, investing in that, is it right now, right time to invest in that? Uh, यार अभी अगर आप करोगे, like obviously the market is down like 10-15%, the Yes, large yes, caps are yes. down, and 20% up to um, the mid cap and small cap index are down. So what I believe is that can be a good time to start. I'm not saying कि आप एक साथ 100% of the whatever the cash you are having, but that's a good time to start an SIP, or maybe अगर आपके पास है so 10%, 20%, whatever cash you are having is at least to start deploying at this time, and don't think about redeeming. I believe it's like 6, 7, 8 months we should be back, and in a year somewhere like maybe a year from here, uh, अगर आप देखेंगे मेरे को लगता है नेक्स्ट February तक वी शुड बी मेकिंग द ऑल टाइम हाई. दैट्स व्हाट आई बिलीव, बिकॉज जो आपके टैक्स कट्स हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, लाइक आपका अभी इंटरेस्ट रेट्स भी कम होना शुरू हो गया, सो लोगों के हाथ में यहाँ से पैसा आना स्टार्ट होगा. टैक्स कट्स का फर्क जो है लोगों को वो 30th अप्रैल ऑनवर्ड्स जो भी लाइक
अप्रैल की जो सैलरी आएगी वो 30 अप्रैल के राउंड आती होगी आई बिलीव। सो वहाँ पे लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आना शुरू होगा एंड वहाँ से लेके दिसंबर जब फेस्टिव सीजन आएगा then the people will start like whatever they spend करते हो they will start spending that and I believe by next February we should be at all time high again. Yeah. Okay, okay. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot, Roshni. Any other question? I'm uh, now in recent time, I'm just struggling with these kind of thoughts only, where to interest, how to invest, sorry, these kind of things only. So I had these kind of questions to ask you. And one more question is going on, whether I should join any new courses, which Uh, like that kind of questions. अगर यार आप कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हो सो देखो आई बीइंग काइंड ऑफ इनटू दैट फील्ड जिसमें मैं खुद वो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ सो बट मेरा मेरा सजेशन आपको रहेगा कि कोई कोर्स ज्वाइन मत करो आप Right. बिकॉज क्या होगा मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल फॉल प्रे कि हम कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे एंड द कोर्सेज गाइस दे विल प्रॉमिस यू कि भाई इतने परसेंट रिटर्न होगा उतने परसेंट रिटर्न होगा and most of the Hmm. time those guys they themselves haven't made those returns, right? So Yes. that's how it is. आप बेसिक फाइनेंस के लिए कुछ ऐसे मेरे को लगता है यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगे आपको और नहीं है तो आप देयर आर सम गुड बुक्स अगर आपको खुद से इन्वेस्टिंग सीखनी है या पर्सनल फाइनेंस के लिए आपको सीखना है नॉट नेसेसरली कि हर एक जो भी एनी इंडिविजुअल जो भी है वो जाकर खुद से दे विल गो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग दिस इज ऑल्सो पॉइंट देयर सो वैसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा खुद से जाके पिक करे जैसे नॉट नेसेसरली आप यहाँ से आप मैं नो वेर यू बिलोंग टू Right now, I'm staying in Jammu ओके Kashmir. ओके Yeah. यू आर इन जम्मू ओके सो अगर आपकी ज़रूरी नहीं सपोज जम्मू से आपको दिल्ली आना है राइट सो Yes. दिल्ली और जम्मू के बीच में आप फ्लाइट लेंगे या ट्रेन लेंगे सो नॉट नेसेसरली कि वो फ्लाइट और ट्रेन आप खुद से ही चलाना शुरू कर देंगे राइट यू विल जस्ट पे अ फी टू समवन लाइक देयर इज अ पायलट टू फ्लाई द सेम वे Yes. देयर इज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर आउट देयर राइट Okay. सो या सो नॉट नेसेसरी बट आप पर्सनल फाइनेंस के लिए लाइक इन द सेंस कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे मेरे पर्सनल फाइनेंसेस भी हो सकते हैं मैनेज करने के लिए कि मैं कैसे करूँ सो देयर आर डिफरेंट बुक्स वुड बी देयर लाइक आई वुड से साइकोलॉजी ऑफ मनी इज अ गुड बुक अगर आप पढ़ोगे ना सो Yes, दोज yes, I बुक्स have read that. yeah those kind of books so those Oh, books will change your thought process itself ki how you start thinking and a lot of people like I talked in my family also like other day I was talking to my sister and she was like कि मैंने 8 months पहले एक SIP शुरू की थी which is like अभी तो वो रेड में है what is the use of that SIP इससे बढ़िया तो मैं कहीं यहाँ करूँगी वहाँ करती सो दैट काइंड ऑफ प्रोसेस आपका जो है वो योर जो आपका थॉट प्रोसेस है ना दैट विल शिफ्ट yes. कि कहाँ से होना है सो यू स्टार्ट रीडिंग दैट एंड अगर आपको बहुत आइडिया नहीं है सो मेरे को लगता है कि यू शुड बी गोइंग विद द म्यूचुअल फंड्स ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे आप पैसे वो लोग ले लेंगे आई एम नॉट श्योर और वो शायद कुछ ऐसा है कि आप पहला ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे वो बोलेंगे कि अच्छा ये तो बहुत ही बेसिक था आपके पैसे नहीं बने नाउ यू टेक द एडवांस लेवल Right, right. Yes. आपसे Gone through पहली that बार scam. Yeah. I या have gone through आपसे that scam. Yeah. पहली बार में 10,000 लेंगे, दूसरी बार में 15 Mhm. से their Yes, yes, yes. level would keep on increasing out there, right? So that's how it is. One second, I'll add Mr. Manikant also here. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot, Roshni, for joining. Hey, hi, Manikant. Hey, hi, I was having issue with the platform. So I Hmm. think in the browser it is coming it down where we can mute and mute ourselves. I didn't get it. Like which browser? Browser, so this StreamYard. Okay, now you are here. So maybe there would be some. No, no, I Yes, was yes. there. I was unable to unmute myself. Oh, okay, okay, not an issue. Yeah. Up to yeah. Do you have a question? Any question there? I had a question just recent depletion of the market. Okay. You see, the Sensex has gone every day it's going by 1-2%. हम्म यार देखो आपने मुझे नहीं पता लाइक
maybe you would have been investing. So Manikant, maybe I believe you would have been investing before COVID also, right? Or you started after COVID? Yeah, yeah. I think I started somewhere in 2018. Yeah, so you have been investing like 6, 7 years approximately now. So in all those 6, 7 years, maybe you would have made a lot of money out there. And I would say not lot of, but your money would have got maybe 2 times, 3 times, 4 times out there, right? Correct. So that is getting depleted. Yeah, yeah. So now out of that, maybe some 20, 30% would have gone. But Yeah. having said that, if you have invested through some professional management in the senses like maybe some mutual fund, some good mutual funds, or some good PMS through good PMS, or some good advisor, maybe you would have taken. So they would have advised you to rebalance your portfolio at this time. And my suggestion to you would be, if you have some stocks, do not just average down randomly. It's more of like people have a tendency कि एक जो सबसे बड़ा इशू है जो लोग हैं, जब उनके पैसे लाइक स्टॉक का प्राइस उनके के बाइंग प्राइस से नीचे आता है, सो पीपल स्टार्ट बाइंग, कीप ऑन बाइंग, कीप ऑन बाइंग, कीप ऑन बाइंग. सो अगर आपको पता नहीं है कि आप क्या खरीद रहे हो, सो डू नॉट एवरेज देम डाउन रेंडमली एनी स्टॉक. दैट्स माय सजेशन इज कि आप उसके अलावा मुझे लगता है अगर आप अच्छे कंपनीज में कर रहे हैं, एंड इफ यू हैव रोटेटेड लाइक what I feel is like, maybe I may be wrong. I have been wrong a lot of times. Maybe I can be wrong again. But what I feel is like कि यहाँ से जो हमारे पिछले बहुत सारे थीम्स भागे थे, आपका रेलवे का थीम जो हमारा बहुत ज़्यादा चला था, एंड देन हमारा आपका PSUs के थीम्स आपके बहुत ज़्यादा चले But थे if यहाँ से. you, sorry for interrupting, but if you see now, the IRFC or other railway stocks that are Mhm. continuously hitting the lower circuit. Yeah, that's what my point is. जो मुझे लगता है कि जो हमारे थीम बहुत ज़्यादा चले थे, railway, PSU and all, they may not be the next leader. Like The वो jinx अब, has broken. या सो वो अब यहाँ से शायद ना चलें. और अगर वो यहाँ से नहीं चलेंगे, तो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने मे बी ऊपर में बाय किया होगा, लाइक पिछले 6, 7, 8 महीने में बाय किया होगा, देखकर कि ये स्टॉक्स पिछले 2 साल में 10 गुना 15 गुना हो गए हैं. एंड इफ द पीपल आर गोइंग टू बाय इट देयर, सो इट मे बी अ प्रॉब्लम अगर वो एवरेज डाउन करते जाएंगे, बिकॉज वो शायद अगले 5, 7, 8 साल फिर से ना चलें. दैट कैन हैपन. आई मे बी रॉन्ग, बट दैट कैन हैपन. दैट्स व्हाट आई And बिलीव. what's your take on, like, let's say we have invested 20,000 and it gets to somewhere around 60-65,000. ओके. So shall we take out our invested value out of it? यार आपने कहाँ लगाए हैं उस पे डिपेंड करेगा बहुत सारा. इट इज लाइक, अगर आपने इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, आस्क योर एडवाइजर ऑल्सो एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर. सो अगर आपने मे बी इन स्टॉक्स में लगाया और आपके पैसे बन गए हैं, और मुझे लगता है कि मे बी इट्स टाइम टू रोटेट फ्रॉम हियर. दैट्स व्हाट आई बिलीव इज. क्योंकि अगर आप देखोगे कि लाइक IRFC आपने बताया ना, सो IRFC इज लाइक 24, 25 के मल्टीपल पर अभी ट्रेड कर रहा है. वाइल इसका आप अगर देखोगे रेवेन्यू जो है इस क्वार्टर के में, वो ऑलमोस्ट फ्लैट है. लाइक 6737 जो था लास्ट ईयर भी था सेम क्वार्टर में, इस क्वार्टर में भी 6737 है, राइट. इन द सेम वे इट्स लाइक, अगर मैं नेट प्रॉफिट भी देखूंगा, सो इट्स लाइक हार्डली मेरे ख्याल में 1 या 2% का इंक्रीज है. और यहाँ से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ये चलने भी नहीं चाहिए इनके, बिकॉज आप अगर गवर्नमेंट का अलोकेशन भी देखोगे, सो दे हैव इन दिस पर्टिकुलर बजट दे हैव रिड्यूस्ड द अलोकेशन. और ये सारे के सारे स्टॉक आप IRFC देखो, अगर 2000 में पिछले 5 साल में इनका एवरेज मल्टीपल देखूं, सो दे वर ट्रेडिंग एट 5 और 6 टाइम मल्टीपल पे ट्रेड करते थे. दे आर लाइक, और आज भी अगर वो, एंड द हाईएस्ट दे गॉट इज लाइक 38, 39 का मल्टीपल उनको मिला है 24 में. लाइक 6, 7, 8 महीने पहले उनको 24, 25 का मल्टीपल मिला है. सो 24 अभी चल रहा है, तो अगर यहाँ से भी अगर आप देखोगे 12, 15 का भी होगा, सो दैट दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट डी रेटिंग फ्रॉम हियर. सो अगर आपकी अर्निंग डबल भी हो जाती है और मल्टीपल हाफ हो जाएगा, तो भी आपका स्टॉक कहीं चल के नहीं जाएगा यहाँ से. और ये अभी देखो डिविडेंड यील्ड इनकी, their dividend yield used to be like 4%, 5%, right? And nowadays it's like 1.23%.
मेरे को ये ज़्यादा अच्छा एक मैट्रिक लग रहा है कंपेयर करने के लिए कि द डिविडेंड यील्ड विल अगेन कम टू 5%. Somewhere, sometime, when will it happen? Not sure, but sometime the dividend yield will again come to around 4.5 to 5%. When will it happen? I'm not sure. But it means कि या तो इनका प्राइस यहाँ से बढ़ेगा नहीं या फिर डिक्रीज करेगा ओवर अ ईयर, नहीं बढ़ेगा या फिर डिक्रीज करेगा, तभी ऐसा हो सकता है. So that is what my belief is, and people started comparing them with the consumer companies जहाँ पर रेवेन्यू बहुत स्टेबल है. यहाँ पर तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट कितना एग्रेसिवली जाना चाहती है रेलवे में. You mean to say FMCG sector? हाँ, लाइक कंज्यूमर कंपनीज आपका एफएमसीजी हो गया, दूसरे कंज्यूमर कंज्यूमर कंपनीज भी हो गए, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज वगैरह भी हो गया. आपका नेस्ले, काइंड ऑफ नेस्ले में तो सारे आपके स्टेपल्स नहीं है, एफएमसीजी भी नहीं है, कुछ प्रोडक्ट्स उनके वैसे Okay. होंगे और दूसरे भी आपके होंगे वैसे करके. सो वहां पर भी आपका जो है काइंड ऑफ जो मल्टीपल पीपल यूज टू कंपेयर कि भाई लॉट ऑफ पीपल नाउ कंपेयर कि भाई कोल इंडिया को मिल रहा है इतना, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एंड जोमेटो को इतना मल्टीपल मिल रहा है, बट दे बोथ बिजनेसेस आर कैन नॉट बी कंपेयर्ड. दैट्स आल्सो अ थिंग कि ये प्रॉफिट हो सकता है, दे विल मेक मोर प्रॉफिट्स, बट देन अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स because of government ownership, then because the government's management is not as agile as these private companies management is, right? So all those things will factor in there. Right. I hope I was Thank able you to for give. the input. Yeah. Thank you. Thanks a lot, Manikant. Uh, so yeah, I'll just discuss few more results out there. Um, Globus Spirit is a company that we discussed, and we said like there's a lot of revenue that comes from a commoditized business, which is the chemical business, rather than their alcohol business or the देसी like India made liquor से आता है, जो कि which we call in our local language देसी दारू से आता है. सो उसका रेवेन्यू अराउंड 12% से डिक्रीज किया है, एंड इनका जो प्रॉफिट्स हैं दे लाइक ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड. दे लाइक 44 करोड़ से profits have come to 41 lakhs out of that, right? So that there was the drastic वहाँ पर रिजल्ट्स थे. जो LT Foods रेवेन्यू इंक्रीज गुड्स, एंड वी सेड अबाउट द कंपनी लुक्स गुड, बिकॉज अगर वो जिस पेस से रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं, इट कैन बी लाइक 15-20% ग्रोअर. दैट्स व्हाट वी थॉट अबाउट द कंपनी, बिकॉज द रेवेन्यू उनका उसी से ग्रो कर रहा था रेवेन्यू के हिसाब से. सो LT Foods 18% रेवेन्यू ग्रो किया है, बट द पैट डिक्रीज स्लाइटली 144 करोड़ फ्रॉम 153 करोड़ से लास्ट ईयर में. एंड ग्रॉस मार्जिन्स बढ़े हैं. सो द मेजर, अगर आप देखोगे ग्रॉस मार्जिन्स बढ़े हैं, सो जो हिट दैट हैज कम, दैट केम फ्रॉम इट केम फ्रॉम द जो उनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट था. ऑल्दो जो इसराइल और हमस के बीच वॉर था, दैट हैज लाइक काफी they have been peace talks and all, and they both have started releasing the each other's people out there, but अभी भी वो बोलते हैं कि वो रूट जो है वो एक्सेसिबल नहीं है, जिसकी वजह से फ्रेट कॉस्ट जो है उनका वो बढ़ा हुआ है, which they said कि like next year तक मे बी that can be eased. So यहाँ पर again margins increase हो सकते हैं next quarter में. बट अगेन वी सेट कि इनका जो मेजर, अगर किसी को एल्टी फूड्स प्ले करना है तो मिडिल ईस्ट और यूएस की वहाँ के लिए होगा. इंडिया में एल्टी फूड्स का है, बट मेजर ऑफ देयर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम देयर, राइट? And then Dodla Dairy again we said it looks a good business. यहाँ पर इनका रेवेन्यू जो है वो 20% से बढ़ा है, and जो profit है that got increased by more than 50%, and management says it was like more of attributing to lower procurement cost of the milk, somewhere around 2 rupees a liter. इस quarter में उनका जो procurement का cost था milk का, that was lesser than the last quarter. Then Honasa Consumer, that is our Mama Earth. Mama Earth is like revenue grew 3 to 4%, which is in line with other consumer discretionary companies also. Uh, Again, the margins got decreased, which has happened with most of the consumer discretionary companies. And I call these products consumer discretionary because उनके products बहुत महंगे हैं. And Hanasa itself makes somewhere around 70 to 75% का gross margin है उनका, which is like जो 25 रुपए की चीज़ है वो आपको 100 रुपए की बेचते हैं as per the company के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से. सो उनके मार्जिन्स डिक्रीज किए हैं होनासा के, एंड वी स्टिल बिलीव लाइक 20-25 करोड़ समवेयर अराउंड द पैट दे हैव
done, and we still believe company looks expensive from here also, right? Uh, then Amit, sorry for the interruption. How would you rate Dodla Dairy? I think I have some amount invested there. Dodla is good, So, yeah. I think it's good. One second, Monica. Sudeep is there. y- I'll just add him. Hey, yeah, hi, sure. Sudeep. Hey, hi, Sudeep. Hello, hello, hello. Long time, huh? Yeah, yeah. Maybe 2, 3 Sundays. Where were Um, you? Actually, I'm a working person, so I don't have time to attempt your call. Today, Oh, suddenly, I just got reminder from oh, YouTube people. So, how are you? Good, na? thank. Good, yeah. How the market is But treating market you? is not good, bro. It will be. It will be. That will be very discussing. It's really painful, na? Last 10, 15 days. Yeah, it is. But like we had some around 10 to 15% of cash, and now we So, have you. most of the results have started coming. Like most of the results are out by now, and some of the Mm-hmm. companies, there our conviction was like got increased because the results was really good. So they increased the Okay, margins okay. as we thought, and there we have, and some of the even some of the NBFC companies where Mm. actually the margins like left, right, and center, these companies are getting it now, right? So many unsecured lending and then microfinance, but some of the NBFCs Mm-hmm. where they have still holding, well, like we have started increasing their our position and consumer But discretionary. Yeah, go I ahead. think NBFC sector is really like a tough situation. Very true. That's what I'm saying. Very selective NBFCs. So my point is maybe some of the private banks, if what even if you ask me what I am doing at this point, I'll just put you on mute. If you ask me what I am doing at this point, some of the private sector banks which I am adding, and then the consumer discretionary where I feel there's like valuation can still re-rate, which is trading at maybe 10, 15 multiple of their this year's earning when the earnings itself are like very low. There I am increasing the position, and one or two, like one NBFC there, I would say, and that is majorly into the affordable housing kind of where the NBFC has been like doing very good in terms of their NPA. If you see, I would say like I haven't seen like this in many quarters with them. Actually, So I discussed one stock. So, mhm. shall I start? Yeah, yeah, sure. That stock name would be Radiant Cash Management. I don't know you track this company or not. I just track it last 2 year. Okay. Right now, they are in like mouth-watering situation. First of all, they say like they increase their EBITDA margin slowly, gradually. Right now, they have EBITDA margin about 17 or 18%. They plan to expand 23, 25% next 2 to 3 quarter. Okay. And how they will do it? Yeah, slowly, gradually they can increase because last quarter they done near about 17%. This quarter they done 19.9 or something. So slowly they can increase their EBITDA, but sales growth is very slow Yeah. because of So maybe yeah. You say something. Continue. yeah, yeah. Actually, what happened? This Radiant and there's one more cash management company. CMS, CMS, CMS. Yeah. CMS, yeah. So CMS was there, and if you see, both are like, I believe multiples are very low for both, right? Yeah, but And their business model is a little bit different. I don't know. You know or no? You don't know. no, okay. CMS people only focus normal ATM business, Mhm. but this Radiant they have cash management business that is different, not like Like similar. it's like collecting the cash from the Yes, 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 yes. merchant, They. like maybe if hospital is get like I was in bank working with an Indian bank previously, still work with a bank. So what used to happen, like hospital में आके जैसे लोग cash देते हैं बहुत सारा, so this cash Right, right, management, right. yeah, we used to provide them cash management, so वहां से cash collect करके and हम अच्छा, जाके right, उसको एकदम right. हम उसको बैंक में जमा करेंगे, यहाँ बल्कि वहां पे हमारे मशीन्स एंड ऑल भी होते थे कि अगर हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप. वो सारी चीजें तो होती थी, राइट? सीएमएस जो करता है वो एटीएम पे कैश डिपॉजिट करते हैं. रेडिएंट जो करता है उसका उल्टा है. दे कलेक्ट कैश फ्रॉम हॉस्पिटल,
mall and everywhere, and they deposit that cash in bank. So their model is little bit different. So मेरे And को जो right now लगता है, they, जो मेरे हाँ को जी लगता बोलिए. है, आप जो बोल रहे हो, आप मार्जिन्स का मुझे पता नहीं, बट जब भी ये लाइक मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला था, मे बी 1.5-2 years बैक, ही सेड दिस सीएमएस के बारे में, जो मेरे को लगता था जी. वो ये कि दिस होल इंडस्ट्री इटसेल्फ जो है ना, जो भी हमारे लोग आजकल ये कैश के ट्रांजैक्शन धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं, ऐसा मेरे फीलिंग थी। Right. दैट्स व्हाट माय पॉइंट वाज़ कि ज़्यादातर लोग यूपीआई जो छोटे हैं वो, और द अदर पीपल लाइक दे हैव बीन शिफ्टिंग टू द कार्ड्स। So Right, exactly. that's what the feeling I had, and that's like that's how maybe the market is also sensing and not giving them a higher multiple. And same time ये कंपनी को भी मालूम पड़ा. So last 2 year what they did, वो लोग अभी they invest money in ready like what I say it jewelry business. Like they deposit jewelry to jewelry or something like that. So they put some money in jewelry business. They're doing some other business also, like Ash Money they acquired just few months back. So So I मेरे को don't know बहुत you track ज़्यादा or not, but I just track it. But that P is also very low, and you just check it. They give a good dividend yield also. yeah, I just Management checked. commit. What about they earn 60%? They give dividend to their shareholder. Oh, that's good. So there's like So I yeah, just 4% dividend yield is there, and yeah, yeah, that's why. I'll definitely But I check don't it. know if it's a bright future or not. So that's why I just confirm it, because you have little bit knowledge about everywhere, नहीं each and यार, every business model. नहीं I नहीं just ऐसा कुछ confirm भी it. नहीं है. It's just like No, no, I track your channel. Actually, you have great knowledge, not little bit knowledge, but you have lot of like each and every business. You have some idea what is going on and everything. I That is was really previous. great. नहीं Sudeep, I was previously in sales now, so I would have met approximately uh, each and every type of business person. And when I used to go to them, I used to ask, "How's the business going?" And I got to know the dynamics of so many businesses from the small promoters. I wouldn't say that I was And meeting some of the CEOs. second thing, you put one video in your channel that would be Sula Vineyard. Yeah, But every quarter they really disappointed. Every yeah, quarter. yeah. Did you watch the video? I Yeah, I already watch it. I yeah. give comment also. Oh, okay. So my point was this only. Every quarter, their management, Mr. Rajiv Samant, he'll come on the call and he'll say next quarter is going to be very good. Every time he'll say like that, and next quarter you will find every time the quarter is bad. So I'm not sure if he could have, and every time the con call happens after like you are into the next quarter 40-45 days, you have already seen 45 days, so you would have at least a bit of idea how the quarter is going. But again you will give some guidance that is like I'm not sure how it is, and constantly bad results. But for wine companies I was tracking this time Fretly also. Hmm. Fretly, they've also not done good, like maybe and most of the alcohol companies if you see, so the Hmm. companies which were majorly focused in the south regions, like these wine companies or your Manison, which is your Tilaknagar industry, which is also like brandy they sell. They are also focused in the south region. So most of the companies which are focused in the south region, because of their issues with the Telangana and Andhra state, they had some issues about the payment, and there you would have seen in the news like United Spirits or United Breweries also they stopped supplying to those states. Some payment issues and all happened with the government. So that's how they most of these companies have taken a hit in the revenue out there. So that can be one reason. I was like going through most of them with the most of the companies it has happened. So what do you think in future? So actually wine penetration is very low in India. So I thought slowly, gradually it would be increase in future, because wine penetration is too much low as compared to outside India. यार हो सकता है, बढ़ तो सकते जी. हैं, लाइक आई वुड ट्रैक दीज, आई एम ट्रैकिंग दीज कंपनीज Sula and Fretly now. Got it. Yeah, Fretly we had not the Piccadilly, it's Fretly, Frettelli, Acha, Fretly. rightly. Yeah, yeah, Hmm. I'm They are tracking also making a wine, right? wine, but the difference is Sula makes like a lower price scale, a bit of lower.
फ्रेटली के जो वाइन्स हैं वो महंगे हैं, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक 1400 एंड अबव अच्छा के जो सेगमेंट है उसमें दे हैव अ मेजर मार्केट शेयर आउट देयर, दे हैव एंड they are but majorly. just one thing I just make a comment over here. Actually, I Mhm. just drink that Sula wine. It's really tasty, but that stock is not tasty. या so that is there out there. So अगर आप देखोगे, मेरे को ऐसा लगता है कि इन दोनों में से कोई एक मार्केट लीडर होगा, जो अभी तक तो सूला ही है, एंड इट वुड बी हाँ जी। गुड टू नो लाइक फ्रेटली जो है वो लास्ट 2-3 क्वार्टर पहले ही, प्रीवियसली इट वाज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड देन क्या हुआ कि एक लिस्टेड कंपनी, देयर वाज अ टीना ट्रेड करके कंपनी थी जिसने फ्रेटली को अच्छा एक्वायर कर लिया. या दे यूज्ड टू बी इन एग्रीकल्चर ट्रेडिंग एंड देन दे एक्वायर्ड फ्रेटली. Now Fretly became suddenly a listed company without IPO, right? So that's just how many of the people it wouldn't have come to the notice. So Fretly become a listed company now. So I believe these two companies, एक तो होगा Fretly का मैनेजमेंट थोड़ा मेरे को लगता है कि ज्यादा एग्रेसिव टाइप है, ऑल्दो अभी तक उनकी सेल्स नंबर्स में ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है. बट राजीव सामंत जी के मुझे लगता है बातें ज्यादा करते हैं. इज मोर ऑफ लाइक दैट, बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो. बट हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि एक वन ऑफ दीज कंपनीज कैन डू गुड. बट सूला में लेट्स सी हाउ द अदर मैनेजमेंट डज. दैट्स हाउ इट इज. Every quarter they give some promise, then they say no. Next quarter we have some Yeah, extra promise. some extra we have. So these, Yes, yes. so where are you Okay. buying these days, Sudeep? Like, Where are you buying? Actually, I just buying Sula last week, so that's why I just confirm it. I think this is a very good dividend deal. Also, at the same time, maybe they can bounce back. यार डिविडेंड यील्ड आप अगर सूला का देखोगे ना लास्ट क्वार्टर का, ठीक है, तो मेरे को लगता है लास्ट क्वार्टर में भी उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है. इस क्वार्टर का अगर आप मैनेजमेंट का इंटरव्यू देखोगे, जहां तक मैंने एक देखा था शायद, सो हाँ जी. लास्ट क्वार्टर में दे डिडंट मेक एनी मनी, ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो से उनका कोई पैसा नहीं बना, बट स्टिल दे अनाउंस्ड डिविडेंड, जहां तक मुझे याद है. एंड हाउ दिस डिविडेंड केम, दे टुक द डेट एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड द डिविडेंड. एक बार आप जाके अच्छा, चेक तो करना. इट्स वेरी रॉन्ग ना. मैं देखना हाँ, पड़ेगा, मुझे देखा नहीं. एक बार आप जाके चेक करना. और इस No, I बार just go. Yeah, I just go to screener and find it. It's give 3% dividend. I thought this is very cheap. So नहीं 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 नहीं, सो एक बार आप जाके चेक करना. और इस बार सीएनबीसी के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि डिविडेंड के बारे में, सो ही सेड कि वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स नाउ. so तो now वैसे, onwards. हाँ आप एक बार वैसे करके देखना कि क्या है. तो इट्स लाइक, वैसे तो जैसा भी चलेगा. बट थैंक्स अ लॉट जी जी सुदीप जी. यार, थैंक्स फॉर Yeah, वॉचिंग यार. you too. एंड जितने भी लोग देख रहे हैं यार, अगर आप इफ इट इज पॉसिबल आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करें, क्योंकि समथिंग हैज हैपेंड दैट यूट्यूब इज नॉट लाइक, इट्स नॉट रिकमेंडिंग अस टू मोर पीपल, समथिंग इज लाइक दैट. सो अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को अच्छा, रिकमेंड और एक करेंगे. बिजनेस एक शेयर करोगे आप? हाँ जी बताइए. तालना करके एक बिजनेस है, तालना प्लेटफॉर्म. आईटी या I think यार great business. Everything is so good, but their valuation is so cheap. They are also disappointed each and every quarter. मैंने Just check it. तानला सच में नहीं देखा तानला का, बट मैंने अभी स्क्रीनर में खोला तो इट The सेज पीई. market leader. I just follow this business also 2-3 year. Every quarter they say we have to improve our sales, our profitability everywhere, but nothing. मे बी दैट्स हाउ द रीजन वुड हैव बीन. बट मैंने ये आईटी वाला बिजनेस नहीं देखे हैं बहुत ज्यादा, सो दैट्स हाउ इट इज. अच्छा, तालना आईटी का काम नहीं करता है एक्चुअल में. वो जो ओटीपी वगैरह आते हैं ना हमारे फोन में, so they drop that OTP to each and everybody phone. So मेरे को लगा ये बिजनेस अच्छा है, बट आई हाँ जी. गॉट एक 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 मैंने यार ऐसा बिजनेस देखा था तानला के. आप मेरे को एक बार कॉम्पिटिटर्स बताओगे, सो आई विल जस्ट राउट 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 या राउट रूटे मोबाइल. मोबाइल, राइट, राउट मोबाइल, रूटे रूट और मोबाइल, राउट और व्हाट अबाउट योर सेइंग? या व्हाटएवर यू कॉल इट. सो उसमें मैंने देखा कि इनको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग व्हिच कंपनी इट वाज, तो उसमें दे गॉट एक्वायर्ड बाय सम अदर कंपनी, राइट. सो व्हाट हैज हैपेंड One कि जो, multinational company purchased out mobile. Exactly the idea. राइट, सो वो जो कंपनी है ना, जो जहां पर भी वो पेरेंट लिस्टेड है, आप उसका मल्टीपल देखना, दे आर चीप ट्रेडिंग एट ऑल्सो सो चीपली वहां पर.
अच्छा, ट्रैक नहीं किया हाँ, मैंने। so I was like surprised कि आखिर ये इतने चीपली यहाँ कैसे करी, एंड आई वाज लाइक, मैंने देखा कि इनका सब कुछ ठीक है ये है, बट अगर वो वहाँ मुझ लाइक आई एम नॉट श्योर कि इफेक्टिव, लाइक लेकिन अगर किसी को है तो यार मैं जाके पेरेंट ना खरीद लूँ। हाँ जी, राइट। मुझे भी Just ऐसा लग रहा है अभी। राइट नाउ वी मूव टू नॉर्मल लाइक एफएमसीजी बिजनेस और नॉर्मल डिस्क्रिशनरी और लाइक नॉर्मल बिजनेस, नॉट फॉर आईटी और नथिंग लाइक दैट। वही You वही वही discuss that Dodla Dairy. They are also a great business, I think. यार डोडला तो Not मुझे huge लगता है, growth, but या but very good but business. that can be consistent from that's what I Yes, feel. yes. Yeah, really true. You are really true. I also track that business. Slowly, gradually, they can increase their EPS and sales growth and everything. Yeah, Great. yeah, sure. Okay. Okay. Great, Well, buddy. Good. थैंक यू You श्रीराम सर, too. एंड You too. एनी ओपिनियन और कार ट्रेड। श्रीराम सर, मैंने कार ट्रेड बहुत पहले देखा था, लाइक व्हेन दे एक्वायर्ड आई बिलीव जस्ट डायल, या दे एक्वायर्ड सम बिजनेस, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द बिजनेस व्हिच दे एक्वायर्ड इन इंडिया, जहाँ पे हम सेकंड हैंड चीजें जाकर खरीदते थे, एंड द मेजर रेवेन्यू ग्रोथ वाज कमिंग फ्रॉम दैट एक्विजिशन। मैंने शायद 7-8 महीने पहले देखा था, और मैंने एक बहुत पहले उस पर एक वीडियो भी बनाया था कार ट्रेड पर, बट रिसेंटली मैंने उसे देखा नहीं है, बट द प्राइस हैज इंक्रीज सब्सटेंशियली। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे, सो आई विल डेफिनेटली चेक एंड लेट यू नो। एंड लास्ट में, बिफोर आई क्लोज, आप सबसे अगेन माय रिक्वेस्ट इज, because YouTube is not sending it to other people or recommending us to other people, so our only source of recommendation will be the our viewers. अगर आप हमें recommend करेंगे दूसरे लोगों को, so we'll get motivated, otherwise it's like in a month's time, I will be like so much demotivated कि this is not going anywhere and all those things. So अगर आप कहीं अपने friends को, family को recommend करेंगे, and they will watch it and they will subscribe, so definitely we'll get motivated, and we'll keep on doing the good work for you and for our viewers. Um so that's how it is. Thanks a lot for all of you for joining, and thank you. Milte next week.